Why did you call this Crocs with socks? रात के 3 बजे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो and you find a guy jittering कि भाई cigarette है क्या? Like the first protest I was a part of was to get milk. As a theme, love is a great carrier. Depression is a bunch of chemicals in your brain and that makes you kill yourself. Like patriarchy for example, not to be like a crazy leftist. क्योंकि मेरी तो बात होती है पापा से बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एनिमल सीन नहीं है। नहीं। वेलकम टू क्रॉक्स विद सॉक्स सात्विक ब्रो। और अभी जब हम बैठे यू मेड अ स्टोरी कि ये उत्कर्ष के आए हो, थोड़ा पॉलिटिकल स्टफ नहीं करूँगा, ऐसा ही हो भाई, मैंने मना ही नहीं किया कभी। नहीं, आई स्टिल थिंक मतलब यू नीड स्पॉन्सर्स एंड स्टफ, इसीलिए मुझे आई गेस कोई रीच आउट नहीं करता क्योंकि आई विल मेक लाइक वेरी पॉलिटिकल स्टफ। व्हाई डिड यू कॉल दिस Crocs with socks? Was the Exactly. Is that something that you wear a lot? No bro, exactly what we are doing right now. To talk about stuff which may be difficult but in a relaxed and comfortable manner. Like Crocs जब आदमी पहनता है तो क्या सोचता है कि यार he cares about his comfort, looks पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, chill kind of guy. And then आप socks के साथ पहन रहे हो तो outliner हो, मतलब आप तो outline के काम कर रहे हो. So that's why I want to give this कि I want to have intellectual or fun engaging conversation but I like to keep it casually. मैं hostel में, like I've said in a hostel, वहाँ पे bro you would never have a single pair. सुबह आदमी उठ रहा है, कोई देख रहा है स्कूल का लेदर का काला जूता, राइट साइड पे लेफ्ट साइड की चप्पल है किसी और की, तो लाइक everybody would just take each other's slippers और पता नहीं कहाँ जा रही हैं, कोई नंगे पाँव जा रहा है, कोई गिर रहा है, and that was wild bro. And people would have an eye जिसके अच्छी चप्पल कौन लेके आया भाई, नई चप्पल कौन, मैं कहा भाई इतने देर ले कैसे यार, चोरी हो रहा है, सामान जा रहा है, like this was very common in our hostel days. Have you had a hostel experience? Yeah. ज़्यादा नहीं हुआ था, आई थिंक 6 to 8 months का था बस, एक सेमेस्टर का। कहाँ पे, कॉलेज में? कॉलेज में, बट इट्स द बेस्ट एकदम, मतलब इट्स द मोस्ट डिजेनरेट यू विल एवर बी। मतलब रात के 3 बजे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो एंड यू फाइंड अ गाय जिटरिंग कि भाई सिगरेट है क्या, एंड यू डोंट हैव सिगरेट्स, लाइक नहीं है भाई जिटर कर, एंड देन सुबह आप जाके देखते हो उसको तो वहीं पे डूल रहा है सिगरेट्स पे सिगरेट्स। इट्स नाइस, it opens up your eyes it opens up your eyes to the world, कि ये सब चीज़ें होती हैं और ये सब is the way towards life. I see. एंड आई वेंट टू फरीदाबाद तो वहाँ पे लाइक वी आर जाट गुजर थे खूब सारे हॉस्टल में। Bro, I relate क्योंकि मैं एविटी से पढ़ा है मैंने, तो same crowd. Yeah, there was this, like the first protest I was a part of was to get milk in mess में. They used to give us milk, which was the only good thing they would serve at during dinner. And all these जाट गुजर्स, they were like gym boys proper, कि मतलब वो सब अखाड़ा करके आए थे, right? तो they needed milk, and then one day the authorities just decided कि नहीं कर रहे milk. Milk देना मत कर देंगे। अच्छा। It was costing them too much or something, I don't know. तो these like these hardcore jats were beating people up and everything. They write a letter and then they go through the entire hostel to get signatures on it. They're like कि या तो sign करो या पिटो। Yes, and I was also, I love milk, so I signed on it. Or were you scared of the meeting? नहीं, I was friends with them. Yeah. Smart move. Yeah. So we finally put up all this mass protest. We did not go to the mess. उसमें letter दिया, उसमें जाके, and we finally got milk back. So yeah, that was the first time I realized कि there's power in protest. I see. और फिर सब पनीर क्यों नहीं भाई, पनीर की डिमांड करते हो? पनीर मिलता था। अच्छा। पनीर नहीं बुरा नहीं, पनीर और चिकन आई गेस 1 day a week था कुछ, बट दूध मना कर दिया था। बताओ भाई, हमारे यहाँ था कि जब हमारे 3 times था, और ये स्कूल डेज के हॉस्टल है, लाइक 8 से 12 पढ़ा था, तो भाई पनीर और चिकन खत्म हो जाता था, 20 मिनट में लौंडे निपटा देते थे, फुल पावर। एंड यू नो वी ऑल्सो थॉट कि भाई ऐसे थोड़ी है, इतना कर रहे हैं हम, एंड वी ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल, हम गए, 2 बातें और सुनने को मिला, 8वीं 10वीं में अकल, मैडम ने कहा चलो बेटा जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। एंड दैट, बट आई वॉज ऑलवेज दिस गाय who'd stand up against the wrongdoings कि भाई मेरे साथ गलत हुआ तो मैं तो खड़ूंगा। एंड आई रियलाइज कि भाई इसमें बहुत ही एक एम्पावरिंग फीलिंग भी है, आदमी मतलब यू नो वुड सॉर्ट ऑफ रियली एंजॉय standing up. Yeah. Were you that kind of guy too? Since the beginning, yeah, later on maybe. School में तो I was like a goodie.
Goody two shoes. Yeah, goody two shoes. And even if not, I was just either a goody two shoes or just disconnected कि पीछे बैठ के drawing बनाना और class चल रही है उस type का. तो yeah, I don't like to talk about school much क्योंकि it's just boring. तो yeah, I guess college में it started more. College was also the first time I made a video, like any video, and it was about cinema. Okay. Yeah, like class project के लिए. Yeah. Were you always interested? Yeah, this brought your interest towards cinema and the things. I was always interested in watching some movies, like not a film of. Okay. I just was interested in. भाई प्रेशर तेरे पे रहता है कि जैसे कंटेंट कर रहा है कि इसको तो पता ही होगा. बहुत whenever I meet people, they assume कि I'm like a film buff, so they'll talk about this weird Iranian movie. Bro, you meant the same to me. Do you know this guy who does abstract art? I'm like, no, bro. Sorry. उसमें था मैं. तो Humans of Cinema, I think you must know. तो फिर वही कर दिया तूने. Humans of Cinema तो page है. So Humans of Cinema, like the founder, Harshit, he's like this. He's the most passionate guy about cinema I've ever met. He has seen everything, right? And the first time we met, he's like, "तुमने ये देखे? Some random Russian filmmaker." मैंने कहा मैंने अभी Bollywood नहीं देखी ढंग से. So whenever I meet, it's just like he's just talking down to me. भाई ये देख. He's just giving me suggestions. So I watch all of those, and then the next time we meet, he gives me 50 other films. तो वही है scene. मूवी पे बढ़िया फिल्म्स है ना. मूवी नहीं, वो एक कौन सी है स्ट्रीट मूवी है ना, उस पे काफी इंडी अच्छी मूवीज. I want to get sponsorship from movie please. Movie shout out. Well, I think you would take Netflix also. I would take anything. Which is your favorite movie? If at all time, मतलब बहुत मुश्किल, बहुत लोग बता नहीं पाते. नहीं, I have a clear one. It's Marriage Story from Noah Baumbach. Have you seen that? No, I have not. I've seen that film like 10 times. It's a very warm story. He describes it as a love story set in a divorce. So it's about this couple that's breaking up and how their ties keep them together still. So Adam Driver है उसमें, probably the best performance of his life. Yeah, love it. I've seen this recurring theme in your videos as well, that you'll mention about a woman that her smile or you just keep thoda sa part. Yeah. Is this something which you try to find in a lot of movies? जैसे ये भी जो movie थी divorce के around या couple के around थी. Like this is something which attracts to you. Your theme as a theme. Like women? Of course women, but as a theme. कि love. Love is a great theme. Like love is a great sort of, as a theme, love is a great carrier. So you can put anything in the theme of love and then deliver it एक तरह से. तो for example, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, if you've seen that. I've heard. I've not watched it, but I've heard. Like it's as revolutionary like as a thought can be in Indian film. मैंने देखा है. They're discussing like Naxalwad and stuff in a not in a light that's immediately at Naxal, right? And they also use love as a carrier, like as a overarching theme, right? उसमें एंड में लव की वजह से वो कैरेक्टर जो उसका शाइनी आहूजा का कैरेक्टर, he goes to like save somebody he hated. वो शाइनी आहूजा doesn't have the best reputation, if you know. Yeah, but मूवी अच्छी है. Movie, yeah bro, देखता हूँ. Ironically love पे है. Love is a good carrier, like you said, no? बहुत ज़्यादा अलग अलग themes भी मैंने देखे हैं on your reels, जहाँ पे mental health एक underline होता है, existential crisis एक theme देखता हूँ मैं. But इतने अच्छे से packaged होता है वो कि बहुत hard hit नहीं करता है. How do you do that? मतलब मैं बहुत ज़्यादा reels I consume based on the work you do, and I have other good friends जो ये मतलब cinematography या film making या story telling करते हैं, but they're not as good as you. What is the secret sauce? Like for me, you're on the top. Okay, thank you. First of all, I don't think I do it like intentionally, but a differentiator I see is that I try to tone things down a lot. क्योंकि मतलब real life isn't extreme, right? It's just mundane, to use the word I keep using everywhere. It's just mundane, and it's उसी mundane life में ही you go through your existential crisis, you go through your breakups, you go through the happiest moments of your life, right? But it doesn't
skyrocket or take a very deep dive. वो हमेशा एक तरह से it takes like a very normal path, right? तो that's what I try to do in my videos as well, कि एकदम ये नहीं करना कि वो कितना रोना है life में, right? And if I'm talking about like the worst possible life somebody could be leading, जैसे in that reel about the woman who lived in my flat before me, right? I could have just made it a very sad reel about this woman who was captured in this society where she wasn't allowed to express herself. But I like deliberately made it funny as well and mocked her as well. Because that's life. Like that's, you don't get to cry through life. Right? In the end, it ends with, I hope she gets a better belt. Yeah. I see what you mean. Like no, it doesn't even end with I hope she gets a better belt, because who am I to get to show so much empathy or to show like sympathy to her? मैं तो बस उससे कह रहा हूँ get some better belts कि like look better. This isn't doing it. Basically. Why? Because the society is not as empathetic. Like this is what you want to portray. Like, why don't you want to use hope? Like you are not that individual. I have hope. Like ऐसा नहीं है. And I also think that hope should exist. Like it's not like I am against hope. For that reel specifically, I was just like, I am nobody to give her hope, because हो नहीं रहा है कुछ. ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल दूंगा तो शादी करने के लिए उसका एकदम लीगल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. तो the best I could do was just be a friend, right? And as a friend, I'm not going to tell you that I hope your life improves. I'm going to mock you and make fun of you, and like that is how I'm going to show you love, right? So that's how I am in my real life as well. कि मतलब I'm not going to like coddle people or anything. I'm just I'll just like mock them and make fun of their worst problems, और फिर उसके बाद we'll solve them एक तरह से. मैंने ये भी नोटिस किया कि जो ऑडियंस है वो engage करती है, वो they're a smart audience. Yeah. They come back with good viewpoints and because also तो 2-3 बारी रील देखना पड़ता है समझने के लिए. अब पता है इनसे कंटेंट स्ट्रैटेजी की 3 बारी रील देखेंगे तो व्यूज बढ़ेंगे. इफ इट्स दैट या फिर इट्स रियली लेयर्ड. How do you come with the layering? Is it something which comes naturally to you, or you put in the script, you put in the work, you put in the effort? No, it doesn't come in naturally. Okay. So all of my scripts, you can see my reels as like a 3-part process, which is scripting, video, and then sound. And I put in the most amount of work in scripting, and then video and sound get the same amount of work. एक तरह से. So for the scripting, I'll come up with a rough script, which is absolutely bad. I don't know if I can call it the S on your podcast. So it's really bad. जो मेरी first script होती है उसके बाद I go through it like it goes through like 10 iterations. So I keep changing it. Then I show it to a bunch of close friends who get to read my script every week. The first draft. Yeah, it's like that's their job. They just get it and they are not allowed to shy away from it. So they will tell me कि ये अच्छा नहीं लग रहा, this part should be this, ऐसा कुछ. And then I'll ignore their suggestions, but I'll take note of where they're stopping एक तरह से. मैं ये बोलने आ रहा था कि बहुत बारी I've seen people जो creative जो outlook रखते हैं, they're not very open to suggestions, which is quite contrary, क्योंकि होना चाहिए आपको. But in a way they feel कि हमें तो पता है, हम तो बना ही रहे हैं ना. That's bad. I don't think that. Like I realize that I'm bad at it, and the people I send it to are actually like smart people who I look up to. So it's not like I will think कि ये तो बेवकूफ है ये क्या. Have you read? Do you read Murakami? No, but I know. Okay, Murakami की एक novel है, Novelist as a Profession. Right. It's like a non-fiction collection of essays. This is just non-fiction essays है इसके. In which he gives his process, and that really connects with me as well. So you give your first draft to somebody, they will tell you कि यहाँ पे इसकी जगह ये लिख दो. तो जो second part है कि इसकी जगह ये लिख दो, उसको ignore करना है, because they are not a writer, right? And they don't know the entire theme that you're carrying in your head, but they are a reader. And as a reader, they've told you कि यहाँ पे खटक रहा है मुझे कुछ, right? So you won't do the suggestion that they've taken, but you will rewrite that part until it starts making sense to you. तो हाँ,
So to them as well. Okay. Like it reads like a well-oiled machine instead of a clunky I machine. see. I see. I see. So वही मैं करता हूँ. It goes through a lot of iterations and then I also do research sometimes on topics. So for example, if I'm writing on a heavy topic like love, मैं जब लिख रहा था, the first time that when I was making something on love, like specifically on love, तब I read through all the poems I could find on love. I read through all the essays I could find. और उसमें you find a lot of like one-liners or thoughts that are really hard-hitting. So you make a collection of that as well, and then you try to reference those in the scripts as well. Because as like a homage to those people, or because you just want your script to be better. You've done psychology, no? Yeah. You told me when you were talking. Love is such a funny phenomena, नहीं? कि आप and especially I would want to know कि like you said you read a lot क्योंकि philosophically तो इंसान बहुत express करता है but logical side of love बहुत बारी relationships में apply नहीं हो पाता है कि अगर आप उसको deduce करो narrow down करके अगर आप maybe at times you want to you have an argument for everything so you seem right in love a lot and people don't appreciate that a lot right क्योंकि वो एक emotional जगह से ज़्यादा इंसान out of touch feel करता है. What do you think about it? कि you're more towards the psychological side or the philosophical side, which the stuff you do, the content you make. Like, मतलब उसको कैसे poetic way of love पसंद है या rational like अच्छा ये love ये oxytocin है ये ऐसे काम करता है this is what it does. I hate that. Like I hate that school of thought कि अरे this is just a bunch of chemicals in your brain. ऐसा थोड़ी है. Like depression is a bunch of chemicals in your brain and that makes you kill yourself. So like it's not like it being a bunch of chemicals decreases its worth at all. So I subscribe to the more poetic side. But then again, my poetic side isn't सिर्फ poetry or it's mundane. I need to stop using that word. वो थोड़ा अजीब सा हो रहा है. Like, मुझे पर थीम पसंद है यार अजीब एकदम नहीं हो रहा है क्योंकि वही असली लाइफ है कि जब आप मेट्रो में चढ़ते हो तो आप देखते हो आप रियलाइज करते हो आसपास क्या चल रही हैं चीज़ें एक योर रील इज ऑल्सो अराउंड दैट नहीं कि एंड आई थिंक मैं भी बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि जब मैं डेली लाइफ में कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ एक किस्सा था जब मैं लिफ्ट में था अभी एंड आई सॉ दिस फैमिली 3 लोगों की फैमिली थी फादर मदर और एक लड़का था एंड ही वोर समथिंग न्यू एंड ही वॉक्ड इनटू द लिफ्ट एंड ही इज लाइक पापा मैं अच्छा लग रहा हूँ कुर्ते में एंड द फादर डिडंट रिप्लाई ब्रो एट ऑल ऐसा था कि अंदर से आवाज़ ही नहीं निकली एंड द मदर इमीडिएटली जम्प्ड टू रेस्क्यू हिम कि अरे बेटा पापा की अप्रूवल चाहिए यू लुक सो गुड एंड दे वॉकड आउट और वहाँ पे मैं खड़ा सोच रहा था सात्विक देखता क्या ये ऐसी चीज़ों का लिस्ट बनाता है क्या उसके पास एक रिजर्व है जहाँ से वो पुल आउट करके फिर ऐसी रील्स बनाता है क्योंकि मंडेन डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती होगी नहीं हाँ डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक आई हैव अ लिस्ट समवेयर बट कभी कभी ऐसी चीज़ें देख के वीडियो आइडियाज आते हैं तो आई हैव अ ग्रुप विद माई सेल्फ ऑन व्हाट्सएप विच आई गेस समबडी एल्स ऑल्सो सेड ऑन योर पॉडकास्ट इसके पहले आई थिंक कैमरा वाले भैया जो राइट तो आई जस्ट डू दैट उसमें वीडियो आइडिया लिख के मैं भेज देता हूँ आई लाइक पुट इट देयर एंड समटाइम्स आई विल हैव वीडियो आइडियाज फ्रॉम लाइक 10 days ago 10 months ago उनको बना देता हूँ whenever I'm out of ideas. तो स्पेसिफिकली द इंसिडेंट यू मेंशन वो तो एनिमल हो गया टॉक्सिसिटी बट उसमें यही है कि आई विल मेक नोट ऑफ इट एंड देन आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट क्योंकि दैट्स नॉट जस्ट वन बॉय दैट्स इट्स हैपनिंग टू राइट it's a symptom of a larger problem and it's happening to like thousands millions of guys around the world. So I'll talk about it definitely and then I'll try to connect it with a larger topic. जैसे मैंने the metro reel that you mentioned, I connected that to anti-capitalism, because metro is a public good and that is so amazing, right? And we won't have that if capitalism is taken it to its end. जो कि look at America for example, doesn't have a good public transport system. Like patriarchy for example, not to be like a crazy leftist. क्योंकि हो सकता है कि वो जो बाप है जो इमोशंस नहीं दिखा रहा है ही इज ऑल्सो कंडीशनड बचपन से टू नॉट शो इमोशंस राइट. तो यू टेक दीज लिटिल इंसिडेंट्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू लार्जर थीम्स अराउंड द वर्ल्ड. तो या आई वुड डू दैट. यू हैड एक और वीडियो में आई वाज वाचिंग जहाँ पे
पापा का यू मेड अ रील अराउंड आई ग्लासेस पे, है ना? और हाँ, जो वो रील थी उसमें यू आर वेयरिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, है ना? और एक कैरेक्टर था हाउस, एक वर्क, एक गर्लफ्रेंड, और पिताजी के साथ यू सेड द सेम, जो ज़्यादा बात नहीं करता पापा से। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अंडरलाइंग थिंग लार्जर स्केल पे तो सबके साथ वही हो रहा है, नहीं? But that specifically wasn't me. Like that is one reel in which I haven't drawn a lot from my life. क्योंकि that was like a paid thing. तो उसमें relatability बढ़ानी थी. तो I thought of it. There I thought like a content creator. भाई लोग relate करेंगे. क्योंकि मेरी तो बात होती है पापा से बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एनिमल सीन नहीं है। नहीं ठीक है, ऐसी अब पर जैसे अभी यू सॉर्ट ऑफ थोड़ी देर पहले गॉटन पॉलिटिकल, है ना, कैपिटलिज्म, ये सब, यू डोंट शाय अवे फ्रॉम शेयरिंग योर आइडियाज, जबकि बाकी कंटेंट क्रिएटर्स वुड ऑफ्टन, जब जो हमारा सर्कल भी है, लोग जब बात करेंगे तो मत कर, मत छुओ, थोड़ा दूर रहो, पर भाई यू एक्टिवली प्रमोट अदर पीपल ऑल्सो। ऐसा और पोस्ट की जहाँ पे भाई अगर आपके पास इन्फ्लुएंस है तो आप उसको यूज़ करो। और उसके साथ फॉलो अप क्वेश्चन है मुझे, लाइक डू यू वांट टू लेबल अदर पीपल एज इन्फ्लुएंसर्स? मुझे तो वही इशू लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अपना काम कर रहे हो आप, क्योंकि अब इट्स एन एरा ऑफ सोशल मीडिया, आप उसके बिना जी नहीं सकते हो, तो आप हर चीज़ को इन्फ्लुएंस के तौर पे लेने लगोगे तो वैसे ही आपको पता नहीं कब आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो उस एड से या कब उस पॉपअप से। अगर आप उसको, उस वर्ड को इतना हार्ड हिटिंग बना दोगे तो लाइक होता नहीं, ऐसे साइकोलॉजी में भी ऐसे बहुत होता है कि आप उसको एक मीनिंग दे रहे हो, एक लेबल डाल रहे हो, तो ज़्यादा इम्पैक्ट मारती है आपको। यार, would you call yourself an influencer? No. Would you call yourself an influencer like 10 years down the line when you have millions of followers? No. I disagree there. Because there's a difference between content creators and like influencers. I hate the word as well, influencer. I don't want to be called that, but hey. So the thing is ki, the way I see it at least, is you are a content creator if you're making stuff like this is how you code, or this is how you sell crypto. Right? If you're making like बहुत niche में आप बस content बना रहे हो, that is content creation एक तरह से. But अगर it's a vague sort of content that you're making, which is something that you're making, for example like podcast है, you're talking about life, मैंने अभी anti-capitalism बोला, सब कुछ discuss हो रहा है यहाँ पे, right? Then you get into a zone where you are influencing people, क्योंकि parasocial relationships develop होंगी, right? You can't stop them from developing, and then those people will listen to you, right? तो वहाँ पे responsibility आ जाती है कि like you need to put out good ideas. It's also like that's the reason I got into it in the first place, to have a voice, right? क्योंकि पैसा कमाना है तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। अभी तो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स भाई जिन्होंने बोला है फिर डूब रहे हैं, बाकी देख लो, मतलब so that's a joke. पैसा कमाना है तो आप MBA करो, you like go to IIMs, you get like a करोड़ों का पैकेज, right? If you're building a public sort of podium अपने लिए, तो you are building this big microphone only to say out weak shit. उसका point क्या है, right? Because if you're generating all this influence for yourself, then it has to be used for good, एक तरह से, for the good of some ideology, some people, कुछ भी हो। आई थिंक वो वीक शिट से ज़्यादा ये भी होता है कि आप उसका ओनर्स नहीं लेना चाहते हो। कहने का मतलब हम कुछ बात कर रहे हैं या हम कुछ ऐसी चीज़ बोलते हैं, मजाक कर रहे हैं, जो हु वी आर, मतलब हम उसको कैरी कर रहे हैं, पर कोई और इंसान उस कंटेक्स्ट को नहीं समझ रहा है। या जैसे जो रोगन का एग्जांपल लेता है, इलॉन मस्क आ रहा है, वो स्मोक अप कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे, एकदम से शेयर गिर गया, है ना, बहुत, या जो रोगन कुछ भी कर रहा है, आप अगर उसको एज अ रोल मॉडल लेके A to Z कॉपी करोगे तो कहीं ना कहीं वो ओनस आप पे ज़्यादा है देन द पर्सन, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ जी रहा है, उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए सही या गलत है कि नहीं है। तो मुझे लगता है वो वीकनेस से ज़्यादा ओनस की भी बात है कि मैं दूसरी की जिम्मेदारी अपने पे क्यों लूँ। बट जो रोगन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जो रोगन is one of the largest influencers out there. Right? People live their entire lives looking up to him. They get tattoos. They get bald. They start MMA. They start hunting. Right. At least in America. Right. They start smoking cigars. So Joe Rogan is the biggest influencer out there. Or the thing is, you can't be apolitical
if you are doing anything, right? And this is not me saying कि नहीं politics की बात करो. This is me saying कि आप करो ना करो, आप politics, you're putting out your politics into the world. Right, I agree. If you're never discussing anything political, you are agreeing with the status quo, right? Which is politics in itself, right? So वही है कि you can't be apolitical. Like Rothko, do you know Rothko? नहीं. Rothko is an artist जिसकी you must have seen those paintings. It's just paint और उसमें 2 rectangle बने हुए हैं. That's it. Have you seen those? नहीं. Like weird abstract paintings नहीं. होती हैं. इनका मजाक उड़ता है. Abstract तो paintings in general देखें, but it's specific. Rothko is an like abstract artist. Was an abstract artist, I guess. Right. His painting was just red. I guess red paint पे 2 black circles. 3 black rectangles. That's it. Right. So you will look at it and you will call it कि भाई ये तो political हो ही नहीं सकती. Right. Which is a common argument. कि abstract art भी होती है. How can that be political? But then you look at that, look at the history of that painting, and like the Nazis were actively banning those paintings because that American abstractionism itself was sort of harming their propaganda वहाँ पे, right? So something so simple is politically charged. तो आप आके कुछ बोल रहे हो तो it cannot be a political way. So if you're going to be political anyway, might as well do good politics. Right. क्योंकि if you ऐसा है नहीं कि you won't platform somebody who isn't slightly right wing या who isn't slightly conservative. आएंगे ही वो लोग. आएंगे क्योंकि आप बाद में पॉडकास्ट इसलिए करना ही चाह रहे हो कि आप दोनों साइड की चीज़ें नैरेटिव तो सुनो. आपका जो स्टैंड है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर आप नैरेटिव में स्टोरीज होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, अपग्रेडेशन होता है, जो मेरा पॉइंट है करने का. मतलब जितना ज़्यादा ये लोगों तक जाए उतना ज़्यादा मेरे लिए भी तो है ना, क्योंकि मुझे भी तो चीज़ें जाननी है, समझनी है, लर्न करनी है. जैसे अभी यू मेंशन जो रोगन, इलॉन मस्क आया उसके पॉडकास्ट पे. बैक देन आई डोंट थिंक इलॉन मस्क वाज मेकिंग लाइक वाइल्ड क्लेम्स जो भी ट्विटर पे वो कर रहा है, राइट? बट स्टिल इलॉन मस्क वाज अ बिलियनियर, राइट? व्हिच इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम इन व्हिच वी लिव. ठीक है. तो दैट इज इट, दैट इन इटसेल्फ इज जो रोगन्स वे ऑफ सॉर्ट ऑफ प्रमोटिंग दैट सिस्टम. बट मुझे लगता है यार आदमी इतना पीछे सोचता नहीं है. मतलब आदमी सोचेगा नहीं, बट स्टिल he will look up to Elon Musk if nothing else, right? Maybe he looked up because he's this guy जिसने SpaceX बनाया, जिसने Tesla बनाया, जो Neuralink बना रहा है, नीचे टनल चला रहा है. Like maybe his fascination towards Elon is very limited in some capacity. क्योंकि ऐसे तो हम किसी भी इंसान को उठाएंगे. There are going to be so many inherent flaws. No, it's like appreciate the art, not the artist. Right. I'm not saying कि I'm not talking about Elon specifically. Right. It's an example जहाँ पे हम उस example को stretch कर रहे हैं आइडिया को, कि बहुत चीज़ों में आप अगर आप स्मार्ट हो इन दैट वे कि आप भले ही उस बंदे से एग्री नहीं करते हो, आपको बंदा पसंद नहीं है, पर उसकी कोई 1-2 बात बढ़िया होगी जो आप उठा के उस बारे में बात करना चाहोगे. But point वही है ना, this fascination with the individuals itself, and this sort of story ki these great individuals have built so much. That is in itself flawed if you think about it. How? Like Tarantino की बात करते हैं तो वहाँ पीछे तो a film does not belong to the director itself, right? It belongs to the editors who worked on it. It belongs to the writers. It belongs to the actors who brought their own stuff to it. वैसे ही it's not a company like Elon Musk personally rockets नहीं बना रहा है, right? At best he is doing marketing for the company and hiring people. But the ideation of it itself is a lot. The ideation wasn't his. Like none of the ideas that he has built specifically. But maybe that wasn't because he hired the best individual, the engineers and other people. Let's go to Tarantino that way. Tarantino is a director. जो भी उसके दिमाग में स्क्रिप्टिंग होगी, जो शॉर्ट्स होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक सेंट्रल पीस रोल तो है ही है उसमें. हाँ. और जो बाकी लोग हैं उनको क्रेडिट्स मिलते ही हैं. Towards the end, मूवी जब खत्म होती है, everybody is mentioned from Spot Boy to whoever. तो I don't see the gap. What was the gap you were trying to tell? कि वो जो editors हैं उनकी भी equal film है. The gap I was trying to tell was specific individuals we sometimes overcredit for the work that was actually done by the collective action of
thousands or hundreds जो भी हो, right? So in the case of like space exploration companies and stuff, it's thousands. And historically also, कि मतलब historically all these scientists have worked on it, which was often funded by governments, right? उस वर्क को लेके finally you were able to start a company. तो it shouldn't be कि this is one single genius who's getting all this credit. I think we like the ideas of heroes essentially also. Yeah, and the idea of heroes is it is sort of central to the C word, can I say? Go for it, bro. For capitalism, to sort of to survive. Let's go further back. You've studied psychology. Evolutionary psychology में जाते हैं. We were tribal people. We always wanted a chief. Always somebody. या फिर हम रोमन एम्पायर पे जब रिफ्लेक्ट करें, मार्कस ऑरेलियस, अदर पीपल, ये बहुत इनहेरेंट है ह्यूमन. ये जो नैरेटिव ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट या ये पर्सन, उस टाइम किसी को आइडिया नहीं होगा क्या कैपिटलिज्म है, क्या कॉन्सेप्ट है. पर मुझे तो लगता है पर्सनली कि हमें स्टोरीज में हीरो चाहिए, तभी मूवीज में हीरोज के अराउंड बनती है. इट्स जस्ट अ कंडीशन, इट्स अ कंडीशन ऑफ द ह्यूमन माइंड. वी अप्रिशिएट इट, आई थिंक. Definitely, we love heroes. We love heroes. और वो ये कि मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अब हम कॉन्सेप्ट से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बट इट्स स्टिल अ वेरी एवोल्यूशनरी थिंग. लाइक इट्स अ वेरी रॉ थिंग. इट जस्ट हैपेंस टू अस. I'm not sure about the evolutionary aspect of it क्योंकि I haven't read up a lot of evolutionary side. और जो pop psych जो होती है evolutionary, that's often wrong. जो एंड्रू टेट यूज करता है वो नहीं. मैं समझ रहा हूँ मैं. हाँ. But yeah, this great man theory, we love it, right? But we shouldn't. थोड़ा सा tone down करना चाहिए. नहीं, I agree. I saw this reel on your feed जो एल्बर्ट कमू जहाँ पे फ्रंट था, उसका कवर था, है ना? और how often do you imagine yourself as Sisyphus? और बस मतलब पत्थर ऊपर रोल कर रहे हैं, जिंदगी चल रही है, क्योंकि वही तो वीडियोस में भी है ना. लाइफ मंडेन है भाई, लाइफ सिसिफस है. और ये कहीं ना कहीं डिड यू थिंक अबाउट इट, और वो वीडियोस में उभर के आ रहा है या फिर बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है? सबकॉन्शियस लेवल पे ही हो रहा है. इट्स जस्ट गोइंग थ्रू लाइफ यू sort of realize this कि मतलब nobody is happy, nobody is really like happy all the time एक तरह. If you can also tell about Sisyphus or what I was mentioning. Sisyphus is this guy who is cursed to take this big boulder, roll it up a hill, and then it will roll down as soon as he reaches the peak. So he has to go do it again. Yeah. And it's actually a metaphor for posting Instagram reels. If you will post a reel, it will get some sort of traction, but then if you don't post again, you'll fail. So, 2 महीने से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया भाई, फिर करना पड़ेगा. Exactly. And but yeah, it's like a metaphor for doing things in life. कि मतलब you don't reach a place in life where it's smooth sailing उसके बाद happily ever after, right? You reach a peak, then you fall down, then you reach a peak, then you fall down, and that is why life is like a normal line instead of a sine wave or something. Right? ECG machine नहीं है, the famous quote. It's just flat line. Yeah. So Albert Camus says Albert Camus, which is the correct pronunciation. The French guy. Yeah, he said that one must imagine Sisyphus happy कि भाई कुछ है कि मतलब इसको कुछ है काम करने को, रोल कर रहे हैं. तो I guess I subscribe to that क्योंकि हाँ, you are happy if you figure out, if you are able to find something in your life that you are okay doing over and over and over again and also failing almost every time. That's why I like Camus. कि Camus बोलता है कि भाई ये खुशी ढूंढ लो तुम. वरना उसका ऑपोजिट क्या होता है, जो पीपल आर लाइक नहीं यार मुझे पसंद ही नहीं है जिंदगी में, तो बस it's all sadness. There are 2 school of thoughts. No, it is called existentialism and this I'm forgetting Absurdism. it. Absurdism, exactly. तो जो एकदम ही fuck up है, नहीं है कुछ है, it's not a good way to subscribe to life because that is how it is gonna be mundane and routinely. बट उसका तो वही है ना कि you find happiness in life. हाँ, वही कह रहा हूँ कि तभी कमू की आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करने में सेंस भी लगता है कि हाँ ठीक है. I was reading about कमू की लाइफ का, तो Camus was also popular with women. Playboy. He was a playboy. Yeah, that's what he's saying कि मतलब भाई जिंदगी है, दुनिया बेकार है,
तो कुछ नहीं कर सकते. But he was a playboy, he would play a lot of football, उसका ये था कि मुझे इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करनी किसी के साथ, मैं किताब लिख दे रहा हूँ वो काफ़ी है, बाकी मुझे गेम खेलने हैं, चिल करना है लाइफ में, लाइक फाइंड हैप्पीनेस. क्योंकि अपसाइडिज्म का ये है ना कि वी आर जस्ट फ्लोटिंग ऑन अ रॉक इन स्पेस, कुछ नहीं होना. एक बोर्डम से नेक्स्ट बोर्डम से नेक्स्ट बोर्डम तक, है ना. और मतलब कुछ लेगेसी नहीं होती है, कुछ नहीं है, आप बस मर जाओगे. तो उससे तो मतलब जिंदगी है, मजे ही कर लो तब तक. सम सॉर्ट ऑफ हीडोनिज्म, बट लाइक एथिकल हीडोनिज्म एक तरह से. आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट मच, क्योंकि मुझे फिर थिंक हाउ मच इज टू मच पे दिक्कत आ जाती है. नहीं आई लाइक थिंक अबाउट हेडोनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताना. किसके हेडोनिज्म के बारे में, जस्ट इन केस. hedonism is just doing whatever gives you the most pleasure, एक तरह से. तो like ethical hedonism would be that you don't cheat on your girlfriend, right. But wait, I don't subscribe to it, क्योंकि I like to think of legacy एक तरह से as an idea, कि मतलब क्यों थोड़ा मॉरल कंपास देता है वो. not moral compass, just it pushes you to like to bring change or to do stuff, make more work एक तरह से. बट जो हम यही बात कर रहे थे कि अगर हम लेगेसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक यही पीपल सोसाइटी जो इलॉन मस्क या इंडिविजुअल्स, ये बहुत ही कोरिलेटेड नहीं है कि लेगेसी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं आप लीड रोल में आ ही जाते हैं. बट वही ना, लीड रोल नहीं. आई डोंट थिंक ऑफ लेगेसी एज के पीपल विल बिल्ड स्टैचूज ऑफ मी. आई थिंक ऑफ लेगेसी एज द, आई ऑल्सो मेड अ रील ऑफ दिस, आई थिंक, जिसने पहिया बनाया एक तरह से, राइट. द फर्स्ट पीपल टू मेक व्हील्स, वी डोंट नो दैट, राइट. बट आवर एंटायर कॉमर्स रिलाइज ऑन देयर इन्वेंशन, राइट. तो दैट like make stuff that then pushes this weird experiment of humanity forward, right. And not necessarily to get yourself famous. How about कि मान ली वो इंडिविजुअल कर नहीं रहे पर आसपास के लोग उसको इतना भारी में ले रहे हैं, तो वो तो एलॉन मस्क ही है. वही कह रहा हूँ, वो तो काम कर रहा है भाई. उसको मतलब वो उसके वीडियोस में भी तो वो he sleeps at the factory या कुछ भी he does. All that is bullshit. That's just We don't know. bullshit. We don't know. I know. How do you know? कैसे जानता है तू? There have been reports from सूत्रों की there have been reports from Tesla and stuff, like where there are entire management teams जिनका काम ही यही to handle Elon Musk's mood swings. No way. Yeah. I'll send you some. Bro, mood blockers ले ले थोड़ा. भाई क्विकली 2-3 रिकमेंडेशन दे दे जो इंडियन सिनेमा को जब इंसान अप्रिशिएट करना चाह रहा है तो उसको देखे वो. और मैं तेरी रील पे देख रहा था गुरुदत्त साहब जी का, you know, you had made a respect because I think he really made beautiful movies, but इतना पता नहीं है. Yeah. Cinematography and everything is just out of the world. Like nothing compared to what others were doing at that point. Right. तो watch गुरुदत्त का सब कुछ basically, right. प्यासा is one of my favorites, तो watch that. और one of my biggest flex is फरहान अख्तर ने वाली ट्री लाइक की थी वाली गुरुदत्त वाली. अच्छा. Yeah. तो उस that was when my parents were like, ठीक है तुम यही कर लो. फॉर एक उसमें भी तो you written की टैग फरहान अख्तर for no reason. हाँ. उसमें ही था. नहीं वो दूसरी, ये गुरुदत्त वाली में वो लाइक क्या. भाई मेरे को ये बहुत फनी लगती है कि you like tag well. हाँ. Tag with blue colored hair. Like that's so funny, and how do you come up with it? कि you know how content game really works. कि it just comes to you. कि it's a learned skill. No, it's not even a learned skill. It's this. I was mocking जो टैग वाला का वो होता है ना इंस्टाग्राम पे, इट्स अ ट्रेंड ना कि टैग अ फ्रेंड और समथिंग. Okay. So I was mocking that when I started posting you tag a wall, tag a blue hair, tag a stranger with blue hair. And people really do, bro. हाँ, तो it's funny कि मतलब people will. There was this one guy who like for several videos I would write tag a cup and he would do act cup. So it's like a good bonding exercise. But हाँ, it's not well thought or strategy कुछ भी. It's just ऐसी मजे. I see. हाँ, तो गुरुदत्त की वॉच प्यासा. What else? इंडियन सिनेमा में तो आई एम नॉट श्योर. वो जस्ट सब्सक्राइब टू ह्यूमंस ऑफ सिनेमा और उनके रिकमेंडेशंस देखो. दे आर बेटर मूवी बफ्स देन आई एम. Okay. Yeah. भाई have you seen Zima Blue? वो लव डेथ एंड रोबोट. Yeah, exactly. That one. उसमें जो उसका पूरा अंडरलाइंग थीम है, what did you make out of it? First of all, I would want to know कि तेरा इंटरप्रिटेशन क्या था उसका? मेरा तो ये था कि क्या कूल बनाया भाई, मजाक. इट्स लाइक
it's about losing yourself to your art एक तरह से man. Just the final state of an artist is where he disappears completely. मेरा तो वही था. Love it so much. I love the entire series so much. ऐसा कुछ बनाना है. If I ever get to a point in my career where I can ask Netflix भाई पैसा दे दो ऐसा कुछ बनाए. I can totally see you doing that, bro. You have that thought process behind. पर जो उसका पूरा थीम था कि एक रोबोट एक बंदी ने बनाया होता है जो पहले स्विमिंग पूल का एरिया क्लीन करता है, वो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, काफी ह्यूमनॉइड हो जाता है, एंड देन ही पेंट्स कैनवसेस पे, छोटे कैनवसेस पे, फिर बहुत बड़ी बड़ी कैनवसेस होती है जिनको वो ब्लू पेंट करता है, तभी ज़ीमा ब्लू इन अ वे, है ना. इवेंचुअली क्या होता है, वो एक रिपोर्टर को बुलाता है समझाने के लिए कि मतलब मैं क्यों वापस, ये मेरा लास्ट एक्ट होगा, विच वॉज उसी स्विमिंग पूल जगह वो वापस आता है, डाइव करता है और पूरा मतलब डिसलोकेट होके वापस एक छोटा सा वो पूल क्लीन करने वाला रोबोट होता है. वही जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और जो रियलाइजेशन हुई कि इंसान कंस्ट्रेंट्स में अच्छा काम करता है. अगर आपके पास एक कैनवस है ड्रॉ करने के लिए तो उसमें आपके आइडियाज़ आते हैं और आप बहुत ब्यूटीफुली ड्रॉ कर सकते हो. 3 मिनट का म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है पर 20-25 के मिनट के बाद you don't vibe with it until it's Radhe Radhe, Shri Radhe Radhe. You wouldn't really enjoy it. So constraint somehow really keeps you going. और उसके लिए भी ये था कि he came back to the constraint कि स्विमिंग पूल है, मुझे इसको क्लीन करना है, and that was my takeaway. That's an interesting takeaway. Do you work well with constraints though? Yeah, definitely. I work well with timelines. एक तरह से I set up deadlines for myself. So I have to finish something under that time, वरना I'll just keep editing my script. I'll never go to the visuals, the sound, बस मैं script edit करता रहूँगा. तो deadlines help definitely. But with constraints, I like to be in an environment where I can keep on increasing the constraints and get more sort of freedom, right? Constraints होनी चाहिए definitely, but I like having a lot of space to like play around. That I think a lot of good stuff also comes out from there as well. You briefly mentioned कि जब फरहान अख्तर ने रील लाइक की थी, है ना? Shout out फरहान अख्तर, underrated. और पेरेंट्स ने बोला कि फुल टाइम कर सकते हो. That was a joke. वाह, मुझे लगा कि भाई क्या पता ये इतना कोई बॉलीवुड थोड़ी है. भाई मुझे लगता है कि भाई बहुत लोग हैं माँ बाप जब अचीवमेंट देखते हैं तो बोलते हैं ठीक है बेटा. नहीं मेरा तो ये था कि I never became like a full-time content creator by myself. But you left your job, no? I was fired. And this is what you tell people. मेरा ये था कि I was in a job with a startup. Can I name the startup? Go for it. Loop Panel is a startup. I was making content for them, right? Smartest bunch of people I've ever met. Like in one team, smartest people. And love them all, love the founder and everything. वो मेरी गलती थी. I started making these videos and I wasn't able to focus on my work there. तो eventually fire हो गया मैं वहाँ पे. और फिर पैसे यहाँ से थोड़ा बहुत आने का दिख रहा था कि शायद स्पॉन्सर्स आ जाएंगे. तो आई हैड सम सेविंग्स, लाइक 3 महीने अब नहीं करते हैं कुछ भी, यही करते हैं 3 महीने फुल टाइम. आई एम स्टिल इन द 3 months. तो अभी पैसा आ जाता है अगर 3 महीनों के अंदर तो फाइन, फिर आई जस्ट डू दिस फुल टाइम. तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट लाइक सम वियर्ड बॉलीवुड मूवमेंट हैपेंड विद मी कि फरहान अख्तर ने लाइक किया, पापा को मैंने दिखाया, पापा रोते रोते कह रहे हाँ भाई तू यही कर. Your passion. That just happens only in movies, is what you try to say. Doesn't happen in real life. I don't, at least not with me. Maybe that's why you make mundane videos. Yeah, exactly. I mean, it's very parallel that way, नहीं कि जब नहीं हो रही है तभी you see, how do I say, irony of it, नहीं कि नहीं होता भाई ऐसा. ये चीज़ real है, देखो इसको. Right. Bro, it was a great session talking to you. I mean, I loved it. I would want you to come back again, and then we can have other really good conversations. Yeah. Thank you so much for coming, bro. I really loved it. Move closer to Delhi. I would come to your place. I don't mind it. Oh, nah, that's fine. Like, that's fine. Yeah, I live in my house is so shitty at all times because I'm always filming there. Yeah, so I don't think we can shoot there. But then you would have to travel. I'll just travel. Just pay for an Uber. Ciao, bro. Take care. Thanks, man. Thanks. Yeah.